In the last class, we have discussed about the types of strain and types of strain. Okay, what are the different types of strain? Tensile strain, compressive strain and shear strain. So before that, you first tell me what are the different types of forces? What we have discussed in the last class? Previous class. Tensile force, compressive force and shear force. So what do you mean by compressive force? Towards the force applied towards the body. Yes. What is compressive force? What is compressive force? We are not asking about the tensile force, I am asking about the compressive force. The forces which are acting towards the body. Okay, so that force we call it as a compressive force. So for example, when you push the door, so your force, here you are applying the force towards the door, means towards the body. So that is compressive force. Are you getting? And what about the tensile force? The forces which are acting away from the body. Okay, so when you open the door, so you are applying the force away from the body, away from the door. So that force we call as a tensile force. And we have discussed about the stress. What do you mean by stress? Stress, the resistance force applied to the everyday. Yes. Internal resistance force applied. Internal resistance Force applied to everyday. offered by the body when the forces are applied on it. Okay. Or when the forces are applied on the body, internal resistance forces or internal opposite forces will develop inside the body. So those opposite internal forces we call it as a stress. Okay, what is the unit of stress? Newton per meter square or Newton per mm square, and it is denoted by sigma. The symbol used to denote the stress is sigma. And what are the types of stresses? Tensile, compressive, shear. So what do you mean by compressive stress? Yes, the stresses which are developed due to compressive forces are called as compressive stress. Okay, and what about the shear stress? The stresses are developed due to The stresses which are developed due to shear forces are called as shear stress. Okay, and yesterday we have discussed about strain and types of strain. Okay, and today we shall discuss about two more types of stresses. Sorry, types of strain. Types of strain. Actually, there are we have discussed three types of strain: tensile, compressive, shear. Okay. Apart from that, two more strains are classified based on the direction of force. Based on direction of force. Types of strain based on direction of force. Yesterday we have defined the strain based on the type of force. So now we are defining the types of strain, or we are discussing about the types of strain based on the direction of force. Okay, so here I will take one body which is fixed at one end. Okay, and on the other end, at the free end, here I am going to apply the force. What is the type of force? This one. What is the type of force? Tensile force, because it is acting away from the body. So here, up to a particular load, there is no deformation takes place in the body. Means there is no strain will takes place in the body. Strain means deformation. You just remember. Deformation means what? Changing shape. Okay. So now, up to a particular load, there is no deformation takes place in the body. Okay. When I increase the force again and again, so some deformation will take place. So at particular force, the deformation will take place like this, because of which
because of which here the length of the body changes. Here some deformation has taken place. Original length was L. Okay. Now the change in length taken place is delta L, or you can denote it like this also, delta L. No problem. Okay. When I apply the tensile force, the length of the body changes. Okay. And here not only the deformation is taking place only along the length, but also the deformation is taking place here on the cross sectional area. यहाँ पे देखो, यहाँ पे original height was, suppose if I take original height as h, small h. Okay, here the change in height taken place. How much? Delta h or dh. Are you getting or not? यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के बाद सिर्फ लेंथ ही नहीं चेंज हुआ. Here cross sectional is also changed. Am I right or not? Initially the height was h. Now the height has decreased. Means this much of height is decreased on both ends. But here I am considering only this part. यहाँ पे भी change हुआ है. At the bottom also the change in height is taken place. Are you getting or not? So now I am going to explain the types of stresses based on the direction of force. So here, if you define this strain, considering the deformation perpendicular to the direction of force. Are you getting my point? So here, this deformation is perpendicular to the direction of force. Am I right? यहाँ पे ये जो surface है perpendicular to the direction of force है. Are you getting or not? So if you consider this deformation to define the strain, so that strain we call it as a lateral strain. This is one type of strain. Are you getting my point? When you define this strain means what? Change in length by the original length. But here, when you define, strain means deformation. So when you define the strain, considering the deformation which is perpendicular to the direction of force. यहाँ पे देखो, ये जो surface ले रहे हैं आप, ये perpendicular to the direction of force है. Am I right or wrong? This surface is perpendicular to the direction of force. If you define the deformation or if you define the strain, considering the deformation perpendicular to the direction of force, so that strain we call as a lateral strain. So here, how do you define this one means? Here, change in height divided by original height. Delta dh divided by h. This strain, this is also strain. This is also strain only, but when you define this strain or when you calculate the strain by considering the deformation taken place perpendicular to the direction of force, so that strain we call as a lateral strain. जब आप strain जो है strain जो define करते हैं perpendicular to the direction of force का deformation लेके consider करते हैं, वो that strain we call as a lateral strain. Are you getting my point? So next, opposite of this one. If you define or if you define the strain considering the deformation taken place along the direction of force in which the force is acting, in the direction in which the force is acting. अगर आप strain जो है कैसे define करते बोले तो by considering the deformation taken place in the direction of force acting. Force is acting like this. Okay, are you getting or not? And the deformation also taking place in the same direction. Or you can say that if you calculate the strain considering the deformation parallel to the direction of force. यहाँ पे perpendicular to the forces ले, यहाँ पे next में क्या होता है? Parallel to the forces होता है. Are you getting my point? When you calculate the strain by considering the deformation in the direction parallel to the forces. आप deformation parallel to the forces consider करके calculate करें तो उसको क्या बोलते हैं हम? Longitudinal strain. Are you getting or not? Sir, the shear strain
सेम होता तो सर shear strain शेयर स्ट्रेन भी सेम ही है हाँ स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन shear strain you can call this yes longitudinal strain linear strain shear strain वो same रहता but when you compare with this lateral strain है तो ये होता सर टेंसाइल कभी कभी क्या होता है स्ट्रेन में शेयर स्ट्रेन में क्या होता है कभी कभी फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है ठीक है तो कभी कभी डिफॉर्मेशन में इधर का मतलब अपोजिट का बट हियर दिस the deformation will take in the direction of force जो force जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है force इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो डिफॉर्मेशन में भी एक डायरेक्शन में क्या लेते हैं एंगल ले रखा है एंगल ले रहा है lateral strain और tensile strain दोनों सेम होते हैं हाँ? lateral strain और tensile strain lateral strain tensile strain हाँ सेम होते हैं Same. कोई अभी इसके हाँ yes sir. perpendicular to the यहाँ पे टेंसाइल के लिए बोले तो टेंसाइल होता है कंप्रेस बोले कंप्रेस होता है आर यू गेटिंग माय पॉइंट अगर आप स्ट्रेन जो है ने when you calculate strain considering the deformation along the direction of force अभी फोर्स कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप डिफॉर्मेशन में जो हॉरिजॉन्टल लिए और पैरेलल टू द फोर्स लिए कैलकुलेट किए तो उसको क्या बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन सो हाउ डू यू कैलकुलेट दिस वन यहाँ along the force पैरेलल टू द फोर्स डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है L by D along the length हो रहा है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ समझ में आ रहा है कि I think you are not understanding completely. यहाँ पे देखो दो चेंजेस ये फोर्स अप्लाई करने के बाद दो तरह के डिफॉर्मेशन हो रहे हैं एक अलोंग द लेंथ हो रहा है यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है ठीक है यहाँ पे देखो एक क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया फोर्स को परपेंडिकुलर है Are you getting or not? This cross section area is perpendicular to the force and this length is parallel to the force. समझ रहे हैं अपने आप यहाँ पे मैं स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकता हूँ कैसे बोले तो चेंज इन हाइट डिवाइड बाय ओरिजिनल हाइट ये स्ट्रेन हो गया यहाँ पे दो डिफॉर्मेशन हो रहे हैं एक अलोंग द लेंथ हो रहा है एक परपेंडिकुलर टू द फोर्स आ रहा है समझ में आ रहा है यहाँ पे देखो स्ट्रेन यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैलकुलेट किया चेंज इन हाइट डिवाइड बाय ओरिजिनल हाइट ये एक टाइप का स्ट्रेन हुआ मगर ये जो है नहीं कैसे कैलकुलेट करें बोले तो यहाँ पे सरफेस जो है परपेंडिकुलर टू द फोर्स है तो उस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं हम लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं क्लासिकल करने की जरूरत क्या है जैसे हमारे पास टेंसर और एक डेफिनेशन डिफाइन करने का है इसलिए वो ये तो एक्सप्लेन कर दो वो एक्सप्लेन कर दो आर यू गेटिंग सो नाउ ये चेंज इन हाइट डिवाइड बाय ओरिजिनल हाइट ये जो स्ट्रेन जो है परपेंडिकुलर टू द फोर्स है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द फोर्स हो रहा है तो इसको हम लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं ओके और एक स्ट्रेन हो रहा है यहाँ पे लेंथ में हो रहा है ठीक है यहाँ पे ये लेंथ जो देखो पैरेलल टू द फोर्स है जैसे फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्ट हो रहा है यहाँ पे भी डिफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टली हो रहा है अगर अब ये स्ट्रेन आप कैलकुलेट करेंगे तो आप उसको क्या बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं और ये स्ट्रेन कैसा हो रहा है पैरेलल टू द फोर्स है और अलोंग द फोर्स हो रहा है जैसे फोर्स एक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल ये भी डिफॉर्मेशन भी यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टली हो रहा है आर यू गेटिंग और नॉट यहाँ पे change in length divided by original length when you calculate change in length by original length and this strain is also strain ये भी strain है ये भी strain है मगर ये जो strain जो है ने force को perpendicular है और ये जो strain है parallel to the force है और along the force है are you getting or not so this is the difference lateral strain means the strain which is calculated considering the deformation perpendicular to the direction of force okay and linear strain means the strain which is caused due to the strain which is calculated considering the deformation along the direction of force or parallel to the direction of force समझ में आपको is it clear थोड़ा ये होता हो समझने में क्या भी है समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है ओके is there any doubt यहाँ पे भी स्ट्रेन हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया में लेंथ में भी हो रहा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया में जो हो रहा है स्ट्रेन है और डिफॉर्मेशन वो परपेंडिकुलर टू द फोर्स है वो स्ट्रेन को क्या बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं यहाँ पे अलोंग द लेंथ पैरेलल टू द फोर्स भी स्ट्रेन हो रहा है तो उस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन ओके एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन वन मोर डेफिनेशन that is nothing but
Poisson's ratio. इसको बाद में डिफाइन करके चलता, but it is a Poisson's ratio. Okay, it is denoted by mu. Okay, are you getting it? Or in some book it is denoted by like this. This is also mu only. Are you getting? So here Poisson's ratio is defined as the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. So that ratio we call as a Poisson's ratio. Actually this is one number. You will get one number. Okay. So based on that you are going to define the property of the material. Later you will come to know. Problem solve करते हैं मान पड़ता है. Poisson's ratio is nothing but the ratio of lateral strain to the linear strain. Are you getting? This ratio was introduced by the scientist named as Poisson. Okay, so by his name only this ratio is identified. Are you getting? Is there any doubt up to this? Strains are classified in two types based on the direction of force. That is lateral strain, longitudinal strain, or linear strain. Okay, वैसे तो हम we know that three strain. Which are those? Tensile strain, compressive strain, and shear strain. Apart from those three, there are two more strain: lateral strain and linear strain or longitudinal strain. Is there any doubt? So now, everything is there in the notes. Okay, कहाँ पे ये Xerox? ये one Xerox. Okay. Notes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ first module. तोगोरी. नोट्स रहेगा नहीं. Notes? मैंने अपने पास एक कॉपी रखेगा. मैं रख रहा हूँ. मैं बोलेंगे नहीं. मैं नाम बोलूँगा. Otherwise, I will today evening I will queue the notes in the A1 Xerox in front of the code. Okay, you can collect what you can just tell the subject name or my name. Okay, you will give the copy of the notes. Notes and Barsudan Zorotala, everything, whatever I will explain in the class, everything will be available in the notes. This is handwritten notes. Okay, so कैलकुलेशन के टाइम पे अगर बॉडी आप लेयर है डिफॉर्मेशन, तो इस बॉडी को लेयर के तो दो तरीके के, ये दोनों तरीके के डिफॉर्मेशन एक साथ. क्वेश्चन में पूछता हूँ. दोनों तरीके करना पड़ता है. हाँ, no. Calculate lateral strain बोले तो ये फॉर्मूला इसका. वो जो डिफॉर्मेशन पे प्रैक्टिकली सर. हाँ, प्रैक्टिकली बोलो. बॉडी है सर ये. Usually maximum in most of the time we consider along the direction of force, that is linear strain. तो दोनों एक साथ होते हैं सर. हाँ. Yes, usually we consider this only along the length. Okay, we don't consider much about the cross section area. ठीक है सर. हाँ? वो भी एक डिफरेंस. हाँ, डिफरेंस ऑटोमेटिक. अगर आप एक पैरामीटर फाइंड करें तो ऑटोमेटिक उसका भी एक ये हो जाता है. मतलब आप एक पैरामीटर फाइंड करें बोले तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट किया जैसा हो. समझ कौन सा तो एक कैलकुलेट करने का पड़ता है, कौन सा तो एक कंसीडर करने का पड़ता है. यूजुअली आप ये कंसीडर करते हैं. आप ये करें तो क्या प्रॉब्लम नहीं है. समझ रहे? यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस लेंथ मैटर्स. लॉन्जिट्यूडनल मिला तो लैटरल मिलता है. कैसे है? हाँ, लॉन्जिट्यूडनल मिला तो लैटरल मिलता. कैसे है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते मालूम पड़ता. अभी ये लिखो का वैल्यूज देखो ये मालूम पड़ता. एंड वन मोर थिंग, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द लेंथ मैटर्स. लेंथ मैटर करता है बहुत सारे एप्लीकेशंस में. ओके, वी डोंट बॉदर अबाउट मच अबाउट द डायमीटर एंड ऑल. ओके, फॉर दैट रीजन वी कंसीडर द लीनियर स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. ओके, जब आपको जरूरत पड़ती है यू कैन कैलकुलेट. नो इश्यूज. ऐसा नहीं कि ऐसा कहीं ऐसा नहीं है. ऐसा कुछ नहीं कि यू शुड फॉलो दिस ओनली. इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. यू कैन कंसीडर दिस आल्सो. ओके, इफ यू कैलकुलेट either this or either this, you will get this second one. Okay, so now we shall discuss about the mechanical properties. So usually we know that every material is having physical properties and chemical properties. Am I right? You already studied in first year or in the UC. Okay, physical properties of the some acid or some material like that.
or chemical properties of the some material or some liquid or acid like that. Okay, what are the physical properties? कौन से physical properties कौन से रहते हैं? Color. So whatever you can see, you can feel, you can touch. So those all are physical properties like color. Okay. अभी chalk का क्या color है? White. So this is the what property of this chalk. Shape, size. Okay. Odor. Okay. And taste. And when you touch, what is the type of what effect? So that is also physical. So all these comes under the physical properties. अभी किसी क्या डिफाइन करना है बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं. अभी ये है इसका साइज, ओके, इसका कलर, ओके. तो इसे टच करने के बाद कैसा रहता है? It all comes under physical properties. Composition chemical का. So like that, these are the physical properties. Similarly, every material or every material is having chemical properties. What are the chemical properties? What is the composition of the material? Okay, what is the toxicity? उसका toxicity कितना है? Okay, is it flammable or not? इतने टेम्परेचर पे वो कैसे रिएक्ट करता है? बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ तो क्या होता है? अभी ऑयल्स रहते हैं, इतना टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा तो सॉलिड फॉर्म होता है. And there are some liquids at particular temperature they get to liquidify. Okay, these are all comes under chemical properties. Likewise, every material is having mechanical properties. Likewise, every material is having mechanical properties, and these mechanical properties are very very important for the mechanical engineers to make any particular what product. Okay, अभी सब जो एक vehicle में एक part बनाना है, so we should see the mechanical properties of the material. What type of material should be used for that particular product? अभी engine है, तो इस engine के लिए आप क्या is it possible to use the plastic for the engine? No. So how you are going to decide? Temperature. So by seeing the mechanical properties of the material. So जब mechanical properties सभी materials की आप मालूम करते हैं, तो जब जाके you come to one conclusion that this material can be used for this engine. Are you getting or not? So from that point of view, mechanical properties are very very important for the mechanical engineers. Okay, and what are those mechanical properties? अभी जैसे physical properties में odor, color, size है. Okay, so here in mechanical properties also there are some parameters. Okay, which are those? Let us see. So first one is elasticity. Okay, elasticity. So elasticity is nothing but it is the ability of the material to retain its original size and shape when the forces are removed from it. Okay, usually what happens, suppose if I take a body, any material, so when I apply the forces, okay, when I apply particular force, at particular force this body gets deformed. If you take just example of rubber, when you apply the force on the rubber, it will stretch. Okay, and when you remove that force, what happens to the rubber? It will come back to its original size and shape. Okay, that type of property we call as elasticity. Are you getting around? We can say that rubber is having good elastic property. Okay, we cannot say this paper does not have elastic property. अभी आप स्क्रैच करो तो कट हो जाता है. Is it possible that paper will get the original size and shape after the removal of force? So we say that this paper does not have any elastic property. Are you getting? So elasticity means what? The ability of the material to regain its original size and shape after the removal of forces. After the removal of external forces. Are you getting? Next one is example. You can say rubber, even mild steel. These steels
लो कार्बन स्टील्स जिसमें कार्बन कंटेंट कम रहता है, तो सभी का जो है ने उसमें भी है डिफॉर्मेशन होता है. व्हेन यू रिमूव द लोड अगेन दे विल गेट द ओरिजिनल साइज एंड शेप, बट दे आर नेग्लिजिबल. वो आपको वी कैन नॉट सी अवर बाय आवर व्हाट नेकेड आईज. ओके, वैसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं. ओके, rubber, why rubber means because in day to day life we use rubber and we can see the that elasticity property clearly in the rubber. Okay, so next is plasticity, opposite of this. It doesn't get Yes, the ability of the material to remain in the deformed shape only even though the loads are or forces are removed from it. Are you getting my point? The ability of the material to remain in the deformed shape even the forces are removed from it. अगर यहाँ पे देखो force apply किया, so the body gets deformed. So when I remove the force, it will remain in this shape only. It will not regain its original size and shape. So the best example is plastic. Why we call that material as a plastic means this is the reason, because that plastic has plasticity property. Are you getting my point? Plastic, when you apply the force on the plastic, okay, suppose it will get stretched. So when you remove the load, is it possible for the plastic to regain its original size and shape? No, no. So that property, that type of property is called as plasticity. Okay, we can say that this plastic has plasticity property. Are you getting? Like that. Best example you can plastic. Okay, there are some materials are also there. Metallic materials, that also you can take the example. Okay. Next, strength. Strength. Yes, what is strength? So you already know about the strength. Strength, how do you define the strength? which can withhold the weight. Yes, withhold the weight up to what? Up to its more than its action. It is the ability of the material to resist to failure, which resist the failure or which resist the breakdown under the action of forces. Okay, suppose if I take a body, okay, here I will apply force. I will apply the force or I will apply the force to break this material. Okay, but this material will not break down. So it means what? This material is resisting this force to break down. This material is resisting to break down. This material is resist to failure. Okay, under the action of forces. Are you getting or not? So we can say this type of property we call it as a strength. Okay, suppose if I hit the wall now, okay, to break the wall, but it will not break. Are you getting or not? So it is resisting to break. मैं भी तोड़ना करके उसको लोड डालूं, मगर नहीं टूट रहा. It means what? It is resisting to break down under the action of forces. मैं force apply करने के बाद तो break down नहीं हो रहा. So we can say that wall is having good strength property. That wall is having strength property. Are you getting or not? Strength is nothing but it is the ability of the material to resist the breakdown or to resist the failure under the action of forces. Okay? So these properties are very, very important. Every time, every time in the examination, main examination, these definitions are asked. Okay? And notes में है. Okay? But understand the concept. Even though आप नहीं पढ़े तो चलता. Elasticity, plasticity, you can explain by your own. Are you getting on? Strength means what? It is the ability of the material to resist the failure. Failure means टूटना. To resist the breakdown under the action of force. Okay. So next is hardness. What is hardness? Indentation, words, simple words का होता बस. Cracks आते हैं. Cracks नहीं आना. So then we can say that it has having good hardness property. Hardness is nothing but it is the ability of the material to resist the scratches. Okay, suppose if I try to
scratch on the desk, but here it is not getting the scratches on it. So it means the desk is resisting the scratches. Are you getting or not? So that type of property we call as a hardness. Yes. सर डक्टिलिटी मैबिलिटी वो बाद में आते हैं next. नहीं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है Mechanical property. Okay, hardness means what? Ability of the material to resist the scratches. So we can say that glass. So here it is very difficult to make the scratches on the glass. Okay, if you try to scratch it, then it will not take any scratches. So we can say that glass is having good hardness properties. Are you getting or not? It is the ability of the material to resist scratches under the action of forces. So that property we call as a hardness. Okay. Next one is toughness. Toughness means it is the ability of the material to absorb the shocks, okay, to absorb the shocks under the action of forces without failure. It is the ability of the material to absorb the shocks. Shocks means vibrations, okay, under the action of forces without breakdown or without failure. Best example, the shock absorbers. Shock absorbers of the bike. Okay, so here when you ride the bike in a rough road, okay, continuously vibrations are produced due to the forces. Am I right or not? So, but what the shock absorbers are doing? They are absorbing the shocks under the action of forces, but it is not breaking without failure. Okay, so that type of property we call as a toughness. So we can say that springs are having good toughness property because usually in shock absorbers we use springs. Okay, so toughness is nothing but ability of the material to absorb the shocks under the action of forces without failure. सर ये इसका प्रॉपर्टी सर इसमें और एक कौन सा सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस सर उसके अंदर टफनेस का मीनिंग क्या है सर जबकि मटेरियल के अंदर फेलियर है तो भी वो चीज को ये होल्ड कर रहा तो इसका मतलब उसका नाम टफनेस अभी मतलब होल्ड कर रहा है तो अब्सॉर्ब कर रहा है अरे गेटिंग ऑलरेडी ब्रेकडाउन है कंडीशन कैसा है सर ये लिखे दिन चलता उसमें नो प्रॉब्लम ऐसा नहीं मीनिंग विल बी द सेम विदाउट फेलियर बट यू आर अभी ऑलरेडी तुम्हें ब्रेकडाउन हो गया ब्रेकडाउन होने के बाद फिर वो ब्रेकडाउन कंटिन्यू नहीं हुआ बट इट इज अब्सॉर्बिंग द शॉक्स समझ में आ रहा है ऑलरेडी ब्रेकडाउन है तुम्हें शॉक्स की वजह से ब्रेकडाउन नहीं हो रहा आर गेटिंग माय पॉइंट अभी देखो ऑलरेडी क्रैक है तो क्रैक फिर मैं क्या हो शॉक्स दे रहा हूँ ओके मगर वो क्रैक कितना है उतना से बढ़ रहा नहीं तो इट मींस व्हाट इट इज अब्सॉर्बिंग द शॉक विदाउट फेलियर बोले तो फेलियर बढ़ रहा नहीं आर गेटिंग क्रैक्स बढ़ रहा नहीं मीनिंग विल बी द सेम डेफिनेशन चेंज नहीं है तुम आर बुक में निकाल देंगे तो अलग अलग डेफिनेशन होते हैं बट एट द एंड द मीनिंग विल बी द सेम toughness means it is the ability of the material to absorb the shocks okay under the action of forces without failure. Okay, spring is the best example. We can say that spring has good toughness property. Are you getting? So next one is stiffness. Stiffness, it is nothing but it is the ability of the material to resist deformation under the action of force. Okay, अभी मैं अपना force apply कर रहा हूँ to make to change the shape of this chalk, but the shape is not changing. It means this chalk is having stiffness property. Are you getting or not? Ability of the material to resist deformation. Deformation means changing shape under the action of forces. Ability of the material to resist deformation under the action of forces. Are you getting or not? Stiffness. Next one is ductility.
So actually ductility is nothing but ability of the material to undergo large deformation before failure under the action of forces. Okay, large deformation. Abhi, for example, if you take the any steel or rubber, so if you want to break down, अभी आपको उसको कट करना है बोले तो it will get more deformation. Thin होके चाहिए कट होता. Are you getting or not? ಈಗ ರಬ್ಬರ್ ನೀವು ಜಗ್ಗಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Are you getting or not? It means that rubber is undergoing large deformation before failure. So that property we call as a ductility. Ability of the material to the ability of the material to undergo large deformation under the action of forces before failure. Are you getting or not? Rubber, steel, they will not break easily. Okay, they will get large deformation. Then they will break. Are you getting or not? And in some book, the meaning of the ductility is given as the ability of the material which can be drawn into thin wires. Okay, that is also the meaning same. Thin wire बोले तो deform ज़्यादा हो रहा है. अभी एक मटेरियल है, अभी एक पूरा ऐसा राउंड बना तो मैं इसे वायर बना, तो ये वायर बना बोले तो वायर कैसे बन रहा हो? यहाँ पे लार्ज डिफॉर्मेशन हुआ तो वायर बन पाने. Are you getting or not? So in some book, the meaning of ductility is given as the ability of the material which can be drawn into thin wires under the action of forces. So gold is also having good ductility property. So it will not break down suddenly. It will go large deformation. आपका कितना भी इंचों से वो ये छोड़ जाता हो, stretch होते जाता. Gold, you might have seen. Gold, silver, they will undergo what stretch. अभी आप देखो रिंग में फोल्ड करते ही फोल्ड होता हो. अभी ये चौक में फोल्ड करते फोल्ड होता है नहीं? So the material which undergoes large deformation under the action of forces before failure, that property is called ductility. Okay, and opposite of this one. Yes, brittleness. Ability of the material which does not undergo large deformation or significant deformation before failure under the action of forces. Just example, chalk. So it will not undergo large deformation. अगर मैं इसको बैंड करने की कोशिश करता हूँ, it will break down. So it means it is not deforming. So this type of property we call as a brittleness property. And these materials we call as a brittle materials. And the materials which are having a good ductility property, we call those materials as a ductile materials. समझना रहा? And there is one more property, malleability. Malleability is similar to the ductility only. This is also almost ductility property only. Okay, but here the ability of the material which can be drawn into thin sheets under the action of forces. So that property is called as malleability. अब कुछ मटेरियल रहते हैं तो तुम्हें शीट्स पे बना के उतना मतलब लार्ज शीट्स बना उतना बना सकते हैं. थिन वायर बनाने का तो नहीं बनते. So that type of property is called as a malleability. Okay, and the last one, resilience. Resilience is what? Very simple. It is the ability of the material to absorb the energy when the forces are applied and use back the same energy when the forces are removed. Are you getting? Example is spring. When you it is the ability of the material to absorb the energy when the forces are applied and use back the same energy when the forces are removed. So what happens to the spring? So when you press the spring, it will absorb the energy because you are applying the forces. Okay, when you remove the force, when you remove the load, so it will give back the same energy. So that type of property is called as a resilience. Okay, this charge does not have resilience property because it is not able to give the absorb the energy and give back the energy. Spring is having
spring will give the what is spring will absorb the energy and give back the same energy. So we can see that throwing the ball throwing the ball resilience का एग्जाम on the wall. Absorb बोले तो फोर्स वहाँ पे होल्ड करना हो. होल्ड करना और गेटिंग वहाँ पे भी होता वॉल पे भी बट नॉट वो एक्सटेंट तक नहीं. जब तक फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स होल्ड करके रखेगा. इट विल गिव बैक द एनर्जी. सर वो गाड़ी का लास्ट में बड़े गाड़ी में लास्ट में हवा छोड़ती है सर. हाँ वो सर लास्ट में हवा छोड़ते हैं फिर गाड़ी हाँ आने के बाद ब्रेक लगाने की वजह से बार हवा है. क्या फायदा नहीं आ क्या हाँ हुआ. तो Okay, just understand the concept. Okay, बहुत सारे you can see these all properties in our day-to-day life. Okay, कुछ मटेरियल में इलास्टिसिटी रहती है, कुछ मटेरियल में रहता है, कुछ मटेरियल में प्लास्टिसिटी रहती है, कुछ मटेरियल में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है. अभी ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो क्या? क्यों ज़्यादा कम स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रेंथ? We express these properties like this. मालूम है आगे कटिंग करो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है करके बोलो. इट मीन्स इट इज रजिस्टिंग दी फेलियर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस. आगे कटिंग करो. सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. ओके कौन सा मटेरियल है सर? कौन सा आपका एग्जाम है? सब प्रॉपर्टीज हो सकता है क्या ऐसा कौन सा मटेरियल? कैनॉट गेट the material is like all these properties. आता ही no. Every material is having all the properties, but not but material does not have all the good, all these has been good form. थोड़ा ज़्यादा कम ऐसा होता है. समझ में आ रही है? अब इसमें भी डक्टिलिटी रहती है, बट बहुत नेग्लिजिबल रहती है. ब्रिटल मटेरियल में भी डिफॉर्मेशन होता नहीं बोल के नहीं, बट वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. अब 0.001 ऐसा आर गेटिंग और नॉट. सो लाइक दैट सभी मटेरियल में सभी प्रॉपर्टीज रहते हैं. समझ में आ रहा है? कुछ मटेरियल में इलास्टिसिटी ज़्यादा रहता है, प्लास्टिसिटी कम रहता है. अभी इफ यू टेक सम रबर्स, अगर रबर में देखें नहीं तो मैं रबर एक लेवल तक ये क्या एक लोड तक ये क्या होता एक पोजीशन पे आता, मतलब एबल टू रिटेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप. ओके, आप एक लिमिट क्रॉस करके फोर्स अप्लाई करे हुए तो वो रिटेन उतना नहीं होता जो ओरिजिनल जैसा रहता. जो मैं डस्टिंग दिस थोड़ा डिफॉर्मेशन रहता है. आगे करो, मतलब वहाँ पे थोड़ा प्लास्टिसिटी है बोले लाइक दिस. आगे समझ में आ रही है? Is there any doubt in this? From the point of examination, these properties are also important, and also from the point of what being engineers, mechanical engineers, these properties are very very important. Sir, ductility और malleability में ज़्यादा फर्क है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे वो थिन वायर्स करके दिखा सकते हैं, यहाँ पे थिन शीट्स. मतलब दोनों का प्रॉपर्टी सेम ही होता है. दोनों का मतलब मीनिंग एक ही. जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होते. डक्टाइल मटेरियल भी शीट निकाल सकते हैं. हाँ, डक्टाइल मटेरियल्स उससे भी शीट निकाल सकते हैं. शीट्स निकाल सकते हैं, मगर वो मतलब इजीली नहीं निकाल सकते. डक्टाइल मटेरियल बोले तो थिन डक्टाइल मटेरियल इज डिफरेंट. डक्टिलिटी इज मतलब पूरा डक्टाइल बोले तो क्या है, तुम्हें इतना याद रखो कि डक्टिलिटी बोले तो लॉन्ग डिफॉर्मेशन होगा बॉडी में. बाद में ब्रेक होता सर. हैं? बाद में ब्रेक होता. बाद में मटेरियल के अंदर ब्रेक नहीं होता. मलियाबिलिटी में ब्रेक होता. होता सर. हाँ, इसमें भी डिफॉर्मेशन थिन शीट्स बनते हैं. इसमें ब्रेक नहीं होता सर. मटेरियल में इसमें ब्रेक होता नहीं होता होता. मतलब तुम्हें शीट कितना कर ये करते हैं, शीट्स बनाते हैं. एट द एंड इट विल ब्रेक डाउन. जियोग्राफी फैक्ट्री होता है सर वो नहीं, मतलब ज़्यादा लेंथ तक आप शीट्स बना सकते हैं. तुम्हें क्या पूछ रहे हैं? डिफरेंस डक्टिलिटी डक्टाइल मटेरियल से लेकर शीट बना सकते हैं उससे भी. हाँ, बना सकते हैं. हाँ, बना सकते हैं. गोल्ड से हाँ, बना सकते हैं. मटेरियल है. हाँ, बना सकते हैं. 15 में पूरा हाँ, बना सकते हैं. टेनिस कोर्ट तक पूरा बना सकते हैं. मगर वो कैसा रहता है, डक्टाइल मटेरियल पे लिमिट रहता है शीट्स बनाने का. तो बहुत ज़्यादा बड़े बना नहीं सकते. समझ में आ रही है? तो मलिएबिलिटी किसका ज़्यादा रहता नहीं. अभी डक्टाइल मटेरियल्स में मलिएबिलिटी रखती वहाँ प्रॉपर्टी है, ये
मटेरियल का नाम नहीं है। प्रॉपर्टी अब डक्टाइल मटेरियल्स में एक लेवल तक रहता हो मलिएबिलिटी, तुम्हें वो लिमिट क्रॉस करे बोले तो वो भी कट होने शुरू होगा। मलिएबिलिटी बोले तो प्रॉपर्टी है, वो हर इसमें रहता। अब डक्टाइल मटेरियल्स में क्या रहता है, एक लेवल तक रहता, वो लेवल से भी तुम्हें ज्यादा शीट्स बनाने कहेंगे वो बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा? स्टील की भी डक्टिलिटी मलिएबिलिटी रहता। अब मलिएबिलिटी को बोले मलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी अच्छी है मटेरियल में बोले तो बहुत ज्यादा शीट ज्यादा बड़ा शीट बना सकते। अरे रेडी करो, समझ में आया कि नहीं? इज देयर एनी डाउट? एग्जाम में बहुत बार पूछे सर, जस्ट इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ओके, you will find the definition of these properties. Define elasticity, plasticity, strength, okay, resilience, ductility, stiffness. ये सब आए सर। And tomorrow I will give you the previous question papers. 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, you just keep it with yourself. वो कैसे यूज करना, क्या यूज करना, मैं बोल सकते हैं। ओके